Most of the tribal people in our country live in the forests. Today, forests are being seen because these tribes have been properly protecting and managing the forests. Forests are an integral part of their daily lives. For the most part, they depend on small forest products for their livelihood. They even worship the tree as their god. But most of the time, the developmental plans implemented are likely to destroying them. In most cases, they lose their livelihoods being displaced for these developmental plans. आमे छती किंबा पत्र शाल पत्र किंबा केन्दु पत्र अन्य आम नाम धूप जो कहती शाल गच जो बाहर सब अणा होता जंगल क्षय होगापर आम जो आम वनजात द्रव्य जोटा चलू से बर्तमान मिली नहीं आम सरकार बाहर से जंगल को जाके मना कले आम पिला माने बाहर को जावाई बाध्य होती. To solve the problem of these tribal people, the central government introduced the Forest Rights Act in the year 2006. Again in 2012, it was revised and changed. The amendment calls for the abolition of indigenous and non-indigenous people's rights. Sambalpur district of Odisha. The tribal-dominated block of the district is Yujomara. About 80% of the population in Meghpal, Kayakud and Chamunda Gram Panchayats under the block belong to the tribal community. Many of these have been displaced by the development plan Hirakud and Rengali Dam. In addition, many displaced people from the border state of Jharkhand have settled in these areas. आमे झारखंड आड़ू आसी थिली जे हमर सेनो जमी बड़ी बहुत समस्या थिला किंतु ई जंगल टाके हमें देखी इनो आसी करी बसोबास करली. Since the beginning of the settlement, they have been involved in forest development, protection of forests from external lakes, and forest management through good management. Forests were a major source of livelihood for them. But in the aftermath of it all, they lost sight of it. Because they were ignorant of the Forest Rights Act or the Forest Act 2012. To resolve this issue, by making awareness, a program has been launched by the voluntary organization PATANGA to ensure forest protection by educating these innocent tribes about Forest Rights Act. जंगल होची लोकंकर जीवन सेथिरे से माने ऋतुकालीन विभिन्न जंगलजात द्रव्य संग्रह करी जीविका निर्वाह करती. दिन को दिन देखा गला लोकंक पाखरे जंगल तो अच्छी हेले जंगल तांकर प्रवेशाधिकार नाही. एथि पई लोकंकर गोष्ठी जंगल संबल अधिकार साब्यस्त करिया पई लोकमाननकु गां स्तर रे तालीम प्रदान करा गला. In the first phase, the PATANGA Organization mobilized the villagers and launched an awareness campaign. The PATANGA Organization tries to aware local youth about the importance of forests, the need for their leadership in protecting them, and the need for forests for their livelihood. The Forest Rights Committee was set up at different villages with local youth and villagers. फॉरेस्ट कमिटी गठनटा है आग आम जानू ना आमर जंगलटा आमर अधिकार बोलिकी ताने जी जेनता करें से जंगल रु जिनस आणुले चार महुल जहाँ किसी भी मिलूला आणुले बोले दूसरा गाँव भी लोक मैंने आसिक नहीं जाऊे. एवं आम जानू ये पतंग तरफ आमको जनाले आमर कमिटी गठन कलु. A decision was taken to present to the government the rights of forest rights or community forest rights through community groups for each village member and panchayat member. In the aftermath, the villagers drew up a map of the boundaries of their territory. हमें मैप के नहीं गुरे आमर गाँ घर के नोचे आमर रास्ता के नोचे आमर कौन के नोचे आमर जंगल के नहीं गुरे आम मैप टे इटा तैयारी करी छु. इटा आमे आमर ई जंगल के आमे जेतकी व्यवहार करू छु आमर माँ बापा माने जेनटा व्यवहार करी आसुथिले सेटा के नहीं गुरे आमे गुटे मैप टे बनै छु जेनटा कि ई जंगल द्वारा आमर भी भविष्य थई पारबा. All the steps were taken to demarcate the forests of the village through discussions with the neighboring villagers. After the talks were held, a number of decisions were made and written to the Department of Forests and the Department of Revenue.
the boundaries of the forest, the watershed, the pastures, the boundaries of the reserve forest, and the place of the deity. After reviewing both sections, a final map was drawn up to prevent any future border disputes between the residents. The meetings were well attended by members of the local youth group and the Forest Rights Committee. After the meetings, the villagers were able to gain a good knowledge of the boundaries of their village, the boundaries of the forest, the watershed, the pastures, the boundaries of the reserve forest, and the place of the deity. आमर सेटा जंगल अधिकार कमिटी गठन हैला परे तो आमर समस्तंकर युवगोष्ठी मिलित प्रयास कि समस्ते आमर गाँव वयोज्येष्ठ लोकों सहित मिसी कर एंटायर प्रोसेस के आम आगे नौछु. Subsequently, these forest rights committees carried out the process of filling out the forest rights claim form B and C. Prior to submitting these forms, all issues were thoroughly discussed by the forest rights committees. आमे भाभी नहीं पारिथिलु जे जंगल जमी अधिकार रे हमर एते सब सुविधा अच्छे हमर निजर जिनिस के आमे निजर बोली भाभी नहीं पारुथिलु आमे भाबुथिलु कि एटा फॉरेस्ट रहे बोली एटा सरकारी जमी बोली सरकारी जंगल बोली जेते बेला कि आमे एक्सपोजर गलु से टाइम रे आमे देखि करी हमको बहुत खुशी लागला कि हमर जिनिस के आमे हमर अधिकार के आनी पारमा आ हमर पाके आले आमे बहुत किछि सुविधा पाई पारमा बोली कि सेटा जानि पारलु. The forms were approved by the village council and submitted to the subdivisional level committee. जंगल अधिकार आईन सरकार निश्चित भाव गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप. प्रथमे लोक मैंने एत मात्रा सचेतन नथिले किंतु वर्तमान लोके सचेतन होगाक आरंभ कले. आम ब्लॉक अंचल रे पतंग अनुष्ठान एथि कार्य करुछि सेमानकर मध्य प्रचेष्टा से समस्ते प्राय वर्तमान सचेतन हो गले आउ सेमानकर दाबी नहीं कि सेमाने भी आम पाख उपस्थित होचंते. युवपीढ़ी माने निज अंचल रे दायित्व नहीं जंगल को किपरि सुरक्षा करिवे एवं गोष्ठी जंगल संबल अधिकार किपरि तांकु मिली पारिबो शिरोनामा ताकू नहीं से माने प्रत्येक गाँव रे जंगल अधिकार कमिटी गठन करथिले. जंगल अधिकार आईन 2006 अंतर्गत समस्त प्रक्रिया से माने करिवा परे 7टी ग्राम मध्यरु 2टा ग्राम वर्तमान उपखंड स्तरीय रे निजर दाबी उपस्थापन करिसंती. आमे भाबुचु एई शिरोनामा तांकु मिलिला परे जंगल रो विकास हेबा सहित जंगल को व्यवहार करि करि सेमानकर जीविका केमति निर्वाह करि पारिबे एवं अंचल रे दादन समस्या केमति रोका जाई पारिबो ताकू नहीं युवपीढ़ी माने नेतृत्व किपरि नेबे एवं पंचायत रो पल्ली सभा ग्राम सभा रे तांकर भागीदारिता दिन को दिन बढ़िबो यही होची मुख्य उद्देश्य. The forest protection program is being carried out on the basis of partnership with village youth and forest rights committees on behalf of the PATANGA Organization. As a result, many villages have been protected from the ravages of their forests.